Good morning, students. Now I do 4th standard Hindi. I think in previous class we do that lesson number 4th revision. Yes or no, children? So now I do lesson number 5 revision. I'll have to take it to your classwork and textbook both also. So I already completed that lesson. Then that day only I will send that notes also. Now I do revision. Understand? Let's take it to your textbook. Come to page number 16. Lesson number 5. Petu Bhakra. Once again I will read that lesson. Listen children. A Gulton बिल्ली गोट एक बकरा था। वह दिन भर मैदान में चलता रहता था। एक बार वह घास को मैदान से जंगल में आ गया। इतने में एक शिकारी की नज़र उस पर पड़ी। आगे आगे बकरा भाग रहा था। शिकारी पीछे पीछे दौड़ रहा था। शिकारी से बचाने के लिए बकरा एक भाड़ी में घुस गया। वह अंगूरों के भेला में छिप गया। शिकारी दौड़ता दौड़ता बाड़ी के पास आया। बकरा उसे कहीं दिखाई नहीं दिया। शिकारी वापस लौटने लगा। बकरा बड़ा खुश हुआ। अंगूरों के हरे भरे पत्ते देखकर उसकी जी लालचिया। जिस पत्तों ने उसके प्राण बचाए थे वह उन्हीं को खाने लगा। देखते देखते आसपास वे सारे पत्ते चटकर गया। एकाएक शिकारी की नज़र उस पर पड़ी। उसने दूर से तीर छोड़ा। तीर सीधे बकरे को लगा। बकरा वही गिर गया। शिकारी अपने शिकारों को उठा ले गया। So that day I will explain that lesson as son children. So now I will tell again. एक बकरा था. They have one big belly goat. वह दिन भर मैदान में चलता रहता था. What he do that work? Goat for every day he simply walk in the ground. So वह एक बार वह घास के मैदान से जंगल में आ गया. He searched for food. What that food for goat? Goat eating grass only. So he searched the food and he come for forest. So इतने में एक शिकार की नज़र उस पर पड़ी. When the goat go for forest, in that time they have one hunter in the jungle. आगे आगे बकरा भाग रहा था. शिकारी पीछे पीछे दौड़ रहा था. So where the goat see the hunter, he run, but the hunter also follow the goat. शिकारी से बचाने के लिए बकरा एक भाड़ी में घुस गया. The goat has very fear. That's why he hidden in the branches of grapes tree. grapes climbers. So वह अंगूरों के भेला में छिप गया. शिकारी दौड़ता दौड़ता भाड़ी के पास आया. So शिकारी hunter also come to garden and he search for goat. बकरा उसे कहीं दिखाई नहीं दिया. But they not have any goats because the goat hidden in the grapes climber. So शिकारी वापस लौटने लगा. The hunter is go back. So बकरा बड़ा खुश हुआ. When the hunter go back, the goat has very happy because the hunter is not killed for goat. So अंगूर को हरे भरे पत्ते देखकर उसका जी लालचाया. When the hunter go return, the goat was very happy. And where he hidden? He hide in the grapes climber. So when he was very happy in that time, he eat the all grapes leaves. So दिन पत्तों को उसके प्राण बचाए थे वह नहीं को खाने लगा. देखने देखने आसपास वे सारे पत्ते चटकर गया. The goat started to eat grapes leaves. Then he complete that full leaves to eat. So एकाएक शिकारी की नज़र उस पर पड़ी. When that grape leaves is empty in the climber, in that time the hunter come again. Then he saw the
goat. So उसने दूर से तीर जोड़ा. When he saw the goat, he do the arrow. So तीर सीधे बकरे से लगा, बकरी वही गिर गया. शिकारी अपने शिकारों को उठा ले आया. ಸೊ ಒಂದಿನ ಒಂದು ಮೇಕೆ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಮೇಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿರುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಹಾರಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆಹಾರ ಹುಡುಕ್ತಾ ಹುಡುಕ್ತಾ ಅದು ಎಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ, ಫಾರೆಸ್ಟಿಗೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಫಾರೆಸ್ಟಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇರ್ತಾನೆ, ಬೇಟೆ ಆಡೋನು, ಹಂಟರ್ ಇರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅವನು ಈ ಮೇಕೆಯನ್ನು ನೋಡಿ ಅವನಿಗೆ ಈ ಮೇಕೆನ ತಿನ್ನಬೇಕು ಅಂತ ಆಸೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಮೇಕೆ ಹಿಂದೆ ಹಿಂಬಾಲಿಸ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ಆದರೆ ಮೇಕೆ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ತುಂಬ ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಗಿಡದ ಬಳ್ಳಿಯ ಹಿಂದೆ ಅಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಂಟರ್ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದು ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹುಡುಕ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲೂ ಯಾರೂ ಕಾಣದಲ್ಲಿರೋದನ್ನ ನೋಡಿ ಅವನೇನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಹಂಟರ್ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಇದನ್ನು ನೋಡಿ ಗೋಟಿಗೆ ಏನಾಯಿತು, ತುಂಬ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ ಖುಷಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ತಾನೆಲ್ಲಿ ಹೈಡಾಗಿತ್ತೋ ಆ ಅಂಗೂರು ಗ್ರೇಪ್ಸ್ನ ಲೀವ್ಸ್ನೆಲ್ಲನೂ ತಿಂದು ಖಾಲಿ ಮಾಡಿಬಿಡುತ್ತೆ. ಆಗ ಹಂಟರ್ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಬರ್ತಾನೆ. ಆಗ ಅಲ್ಲಿ ಗೋಟ್ ಇರೋದು ಕಾಣುತ್ತೆ. ಸೊ ಆಗ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ಗೋಟಿಗೆ ಬಾಣವನ್ನು ಬಿಡ್ತಾನೆ. ಸೊ ಆ ಗೋಟಲ್ಲೇ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ. ಅವನೇನಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ, ಹಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಂದಿರ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅವನಿಗೆ ಹಂಟರ್ ಸಿಕ್ಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಅದನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ವಾಪಸ್ ಮನೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹೂ ಈಸ್ ದ ಫೂಲಿಶ್ ಹಿಯರ್ ಇನ್ ದಿ ಸ್ಟೋರಿ? ಬಕ್ರ. ಸೊ ಎ ಗುಲ್ಟಾನ್ ಬಿಲ್ಲಿ ಗೋಟ್. So I think you understand that lesson. Yes or no, children? So I will send that notes also. See in your classwork what you write in first line. Glossary words: bakara, billy, goat, gas, grass, din, day, shikari, hunter, maidan, ground, bhadi, garden, angur, grapes, बेलों, climbers, पत्ते, leaves, तीर, arrow, जंगल, forest और wood, नज़र, sight. So next line, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दो. बकरा दिन भर क्या करता रहता था? बकरा दिन भर मैदान में चलता रहता था. शिकारी की नज़र किस पर पड़ी? शिकारी की नज़र बकरा पर पड़ी. बकरा शिकारी से बचाने के लिए कहाँ छिपा? बकरा शिकारी से बचाने के लिए अंगूरों की बेलों में छिपा गया. बकरे ने खुश होकर क्या किया? बकरे ने खुश होकर हरे भरे पत्ते खाने लगा. शिकारी द्वारा छोड़ा तीर किसने लगा? शिकारी द्वारा छोड़ा तीर बकरा लगा. नेक्स्ट, दिए गए शब्दों के अर्थ समझाइए. That means they are given some words. You write the meanings of the words. जंगल वन, भाड़ी बाग, प्राण जीवन, शिकारी शिकार करने वाला, बेल लता, नज़र दृष्टि. नेक्स्ट, वचन बदलो. That means they are given singular words. If you change the plural form. बकरा बकरे, नज़र नज़रे, पत्ता पत्ते, घड़ा घड़े, गधा गधे, बाड़ी बाड़िया, पत्ती पत्तियाँ, साड़ी साड़ियाँ, नाली नालियाँ, ताली तालियाँ. So in that next line, प्रत्येक के तीन तीन नाम लिखो. That means they are given one word, means you write the three words of same meanings words. Jungle, what's the meaning of the word jungle? Forest. So they are given, they write other three words given same meanings. One, that means forest. Aranya, that means also forest. Kanan, that means also forest. And the next word, fool, flower. Kusum, Suman, Pushpa. Then Suraj, sun. Ravi, Bhaskar, Dinakar. So this much means you write in your classwork.
So now children, so that day only I will send that notes. You already completed the classwork means don't write again in your classwork. You already write in your classwork, don't write again in your classwork children. You practice in your book 4 or 5 times. If you not complete the classwork means sit and complete the classwork. Okay children, I think all of you understand that lesson. Yes, once again all of you sit and read that lesson in your home.